Dear friends, welcome to our new chapter. We will be starting with new unit molecular spectroscopy from this lecture onwards. What is molecular spectroscopy? Molecular spectroscopy is interaction of radiations with the matter. So the spectroscopy is a study of interaction of electromagnetic radiations with matter is called as a spectroscopy. The interaction involves exchange of energy where the radiation will be giving its energy to the matter, or sometimes if the matter is at a higher energy state, then it will radiate energy in the form of radiation and comes down to the ground state. So it can either take up the energy or it can give the energy. In both the ways, it will be either an absorption spectroscopy or an emission spectroscopy. Absorption spectroscopy will involve where the radiations will be absorbed by the matter. Then we call it as absorption spectroscopy. In the emission spectroscopy, we will have the matter will lose energy in the form of radiations. So radiations will be given out. Electromagnetic radiations will be given out in an emission spectroscopy, and in absorption spectroscopy, the electromagnetic radiations will be absorbed by the matter. Now, depending on what is the matter made up of, it will be divided into two types. One is an atomic spectroscopy and another one is a molecular spectroscopy. In atomic spectroscopy, matter is in the form of atoms. If the matter is in the form of atoms, then we have call it as a atomic spectroscopy. In this case, यहाँ पे बहुत ही कम लिमिटेड होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रोस्कोपी या हीलियम एटम का स्पेक्ट्रोस्कोपी या ऑर्गेनिक ऑक्सीजन एटम्स का स्पेक्ट्रम जो होता है, वैसे कुछ जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 118, उनका अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम स्टडी करते हैं तो दैट विल बी योर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो इट हैज ए लिमिटेड यूज because there are only 118 elements that are present over there. लेकिन molecular spectroscopy में हमारे पास vast number of molecules हैं. We have millions and millions of molecules are present of both the organic as well as inorganic sources. So depending on them, each of the molecule will have a different type of interaction. सो यहाँ पर हमारे पास स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स हमारे पास मिल सकते हैं. सो द इंटरेक्शन इज ऑफ वेरिड टाइप इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. इन दिस यूनिट और दिस चैप्टर we will be studying about the molecular spectroscopy, where the matter is in the form of molecules and it interacts with the radiation. That is, when the molecules are interacting with radiations, we call it as a molecular spectroscopy. When it is interacting with radiations, first we need to know what are the radiations made up of. The electromagnetic radiations involves propagation of light in a oscillating electric and magnetic fields in the direction perpendicular to the direction of propagation. Now in this diagram, if we say that this is our direction of propagation along the x-axis, then along y-axis we have the electrical field that is projected, and along the z-axis we have the magnetic field that is being projected. So along the z-axis we have a magnetic field which is exactly perpendicular to that of the electrical field along y-axis, and propagation is on the x-axis. So this is what our electromagnetic radiations are made up of. In this, we have these radiations are characterized by three things. If we this is our radiation propagating along this axis, then we can have the matter that are involved in it can be propagating in this particular ways. My diagram is not so good, but it gives you a fair idea about what is happening over here. This gives us our amplitude, while this will be giving us the wavelength or the length of the matter, the distance being propagated over here. So यहाँ पर क्या होता है कि this wave is characterized by three words, three things. One is c, that is velocity of light. The other is wavelength of the radiation, and third is the frequency of the radiations. What does this means? The velocity of light is very simple, that what distance it covers per second.
So how many meters it is covering per second. So that will be giving us velocity of light. This velocity of light for electromagnetic radiation is constant, and we normally have it 3 into 10 raised to 8 meters per second is the value for c, that is velocity of light. Similarly, the wavelength of light is defined by the distance between any two points in a light in the wave which are in the same type of motions. यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ये पार्टिकल्स जो स्ट्रिंग में थे, यहाँ पर ये पार्टिकल्स आपके मूव करेंगे आइदर इन द अप डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे अप में डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पर वो डाउन डायरेक्शन में मूव हो रहा है. सो अगर सपोज यहाँ से हम लेते हैं तो उसके बराबर का एक यहाँ पर आता है जो सिमिलर टाइप ऑफ मोशन में है. सो ये जो डिस्टेंस है इन बिटवीन these two points, whatever the distance we have, that distance we call it as a wavelength. Generally we measure it in terms of distance between either two crusts, that is these highest points in the amplitude, or it is being measured as the distance between the two troughs, either between two crusts or two troughs. The distance we call it as a wavelength. Frequency is measured, this wavelength unit is meters, while the frequency is measured in terms of per second, that is how many waves are traveling from a particular point at in 1 second. In 1 second कितने waves यहाँ से पास हो रहे हैं एक particular point से, वो आपका frequency होता है. ये जैसे ऐसे होता है कि जैसे आप एक suppose एक दादर स्टेशन पे आप खड़े हो और एक प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो, सपोज 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो दादर स्टेशन, और वहां पर आप गिन रहे हो कि एक घंटे में कितने नंबर ऑफ ट्रेन वहां से पास हुए. दैट विल बी गिविंग यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स on that particular platform or at that particular point where you are standing. So that will give you frequency of trains. वैसे ही यहाँ पर अगर इस लाइन में अगर आप खड़े होते हो और आप गिनते हो कि कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं पर सेकेंड, then that will be giving you the frequency of the electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations की frequency बहुत ज़्यादा होती है, up to the level of 10 to the power of 18 तक इनका frequency होता है per second. So it is a huge number. So generally we measure it in terms of hertz or per second. These are the units for frequency. These are interrelated to each other. Velocity is related to nu, that is frequency, and lambda as c is equal to nu lambda. So we have nu, that is frequency, will be equal to c upon lambda. This quantity 1 upon lambda is defined as nu bar or wave numbers. Nu bars or wave numbers. यहाँ पे क्या है कि wavelength is the distance between any two similar points. So that will be giving you wavelength. लेकिन बहुत सी बार ये wavelength का यूज करना डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा. सो हम यहाँ पर दूसरी एक क्वांटिटी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए वेव नंबर. वेव नंबर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, सपोज 1 मीटर, सो 1 मीटर डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं, दैट विल बी गिविंग यू वेव नंबर. या 1 मीटर में या फिर 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं, दैट विल बी गिविंग यू वेव नंबर्स. सो वेव नंबर्स इज नथिंग बट how many number of waves are present in a particular given distance, either in a centimeter or in a meter. So its units will be per meter or per centimeter. That will be the units of wave numbers. Wavelength का unit है meters and frequency का unit होगा per second या hertz, while velocity का unit होगा meters per second. These are interrelated to each other. Similarly, the energy associated with this electromagnetic radiation will be E is equal to h nu. Through Planck's constant we have E is equal to h nu, where h is Planck's constant and has a value of 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule second. This will be the value of Planck's constant h. So this equation can be given rise to calculate the energy of a particular radiation. E is equal to h nu, where nu is frequency of the radiations. So we can convert this into
as nu we have it c upon lambda, so E will be equal to hc upon lambda. So if we have lambda, that is wavelength, then we can easily calculate the energy associated with that wavelength. Or if there is energy levels are there, if two energy levels are there, say from energy level 1 to energy level 2, if a matter needs to go from energy level 1 to energy level 2, it needs to absorb a certain radiation. The energy associated with radiation should be equal to, the energy of this radiation should be equal to the difference between these two energy levels. So delta E should be equal to the energy associated with the radiation. So here we will have delta E, that is difference in energy levels of the matter, equals to E, that is h nu, or this should be equal to hc upon lambda. So if we have wavelength, velocity is a constant 3 into 10 raised to 8 meters per second. So we can calculate the energy difference between the two energy levels. Electromagnetic spectrum can be divided. It's a very huge spectrum, so we can divide them into different categories like radio waves, microwaves, infrared radiations, visible light, ultraviolet, X-rays, and gamma rays. The visible region is the one which is sensitive to our eyes, and we can see between in this particular region only, which is from 380 nanometers to 780 nanometers. It is a very small window in the total electromagnetic spectrum, कि जिसमें से हमें सिर्फ यही हमारे आंखों के लिए सेंसिटिव होता है, और दिस हेल्प्स टू विजुअलाइज द थिंग्स दैट आर बीइंग प्रेजेंट. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके आगे भी बहुत होता है और इसके पीछे भी बहुत होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काफी बड़ा होता है. डिपेंडिंग ऑन द एनर्जीज इट विल बी हैविंग वेरी लार्ज amounts. So when these are the wavelengths associated with the electromagnetic radiations of different regions. The scale of this can be imagined as radio waves are having the highest, largest amount wavelength, which can be compared to a few buildings, skyscrapers. While the microwaves can be about smaller than that, about human beings or honeybees. While infrareds are of the order of needle points, that this much will be there. Similarly, visible lights are having wavelengths which is equivalent to monocellular organisms like bacteria or protozoans. Molecules are compared to X-rays wavelengths, and then gamma rays are up to the atomic nuclei. The regions of this electromagnetic spectrum can be compared with the wavelength as well as the frequencies. This table gives us the different wavelength range for different regions of the electromagnetic radiations and the frequencies of different regions of the electromagnetic spectrum. Here the X-rays are used to detect bone fractures, as well as we use it for knowing the molecular structures. For knowing molecular structure, we can use this X-rays. Ultraviolet rays can be used for finding or transitions of electrons from one energy level to another energy level in the molecules as well as in the atoms. The visible region is used for visualization as well as for the electronic transitions. Infrared regions is used for heating purposes. It heats the earth. Also, it maintains the atmosphere temperature of the earth atmosphere, and can be used for bringing out vibrations in the molecules. Microwave are having little lesser energy than infrared regions, but they can be used for heating. We have our microwave ovens in our homes as well as in the hotel industries for heating purposes, for cooking purposes. We are using these microwaves. Similarly, microwaves are used for carrying out different reactions also, and many more uses are there for microwaves. This microwaves also brings about the rotational motions in the molecule. So it can be used for carrying out rotational motions in the molecules. Similarly, radio waves can be used for either televisions or for FM radios. We can use this radio waves. These are having lesser energy or the least amount of energy
amongst all the regions of electromagnetic spectrum, and they can be used for rotating either the electrons, or they can be used for rotating the nuclei. There the amount of energy required is very less, so they can be used for rotating nucleus of a atom or a molecule. Matter possesses two types of energies. One is a kinetic energy and another one is a potential energy. Kinetic energy can be divided into three different main parts. One is a translational energy, where it is going from matter going from one position to another position. Whatever the energy is required, that energy is a translational energy. This energy is a continuous energy, or it is having the least amount of energy is required for this translational motions. Second one is rotational motions. This rotational motions, kinetic energy is required for rotating a particular molecule in say if we have a diatomic molecule, it can rotate on its own axis, as well as it can be rotated in the axis perpendicular to the bond axis. So for that, whatever energy is required, that energy is also a kinetic energy. Similarly, kinetic energy is used for vibrational energies also, that is bringing out the vibrational motions in the molecule. Potential energy arises from intermolecular forces of attraction, so it gives rise to electronic energy of the molecules, that is from one electronic energy level to another electronic energy levels in the molecule. The energies are quantized through our Max Planck's theory. Energies are all quantized. This any type of energy is quantized, that is a molecule can have only certain value of energies, not all values are possible for it. Each permissible value, each allowed value is known as an energy state or an energy level. So these energy states or energy levels can be different for different types of energies. We can have it like electronic energy, vibrational energy, or rotational energy. Their energy levels or energy states will be different for them. The molecule will interact with radiation if its energy changes from one level to another level, from one level to another level. That is, if a molecule is having two energy levels, say energy level 1 and energy level 2, and if the molecule is present in the energy level 1, and if a radiation is being coming up, if this radiation has enough energy to bring this molecule from energy level 1 to energy level 2, then it will be absorbing this energy radiations. Otherwise ये radiation को वो absorb नहीं करेगा. अगर ये radiation का energy exactly same है between exactly same as the difference between these two energy levels, तो ही उस energy उस radiation को वो absorb करेगा. Otherwise उस radiation को वो absorb नहीं करेगा. The amount of energy absorbed or emitted is equal to the energy of the radiation. Means कि यहाँ पर ये radiation completely absorb होगा, और यहाँ पे जो transition होगा वो transition will be equal to the amount of energy that is associated with the radiation. Radiation में जितना energy है उतना ही energy यहाँ पे molecule gain करेगा when it is going from energy level 1 to energy level 2. So the change in energy in a molecule will be equal to the difference in energy levels, that is E2 minus E1 will be equal to the energy associated with the radiation, that is E is equal to h nu. जो हमने अभी पहले देखा था कि this E is equal to h nu is the energy of the radiations. So change in change in energy of the molecule will be equal to energy difference between the two levels, that is delta E equals to E2 minus E1, this much. And when it absorbs this radiation, so this delta E will be exactly equal to E is equal to h nu. So delta E will be equal to E2 minus E1 equals h nu. So delta E equals h nu, or nu, the frequency of the radiation can be calculated as delta E upon h, where h is a Planck's constant. This is the basic equation for spectroscopy. That is, the frequency of the radiation absorbed will be equal to the change in energy between the two energy levels divided by the Planck's constant.
Types of energy levels can be either electronic energy levels or vibrational energy levels, rotational energy levels, or the translational energy levels. Translational energy levels are more or less continuous energy levels, or we call it also as a continuum energy levels. तो इनके एनर्जीज यहाँ पे काफी डिफरेंसेस, इनका जो एनर्जी स्टेट्स के बीच में जो एनर्जी लेवल्स है ट्रांसलेशन के, इनके एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स इन ए ट्रांसलेशनल मोशन इज वेरी स्मॉल. सो यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए होती है बहुत ही कम एनर्जी में भी ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चले जाते हैं. इससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लेवल लगती है व्हेन वी आर हैविंग अ रोटेशनल मोशन. When we brought about a rotational motion in a molecule, तो उसमें हमें ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल से थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तभी ये रोटेशनल मोशन आता है मॉलिक्यूल के अंदर. इससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लेवल चाहिए होता है वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए. जब मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड्स को हम पुल करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो वो स्प्रिंग की तरह मूव करते हैं. सो दैट मोशन वी कॉल इट एज ए वाइब्रेशनल मोशन. ये वाइब्रेशनल मोशन क्रिएट करने के लिए हमें रोटेशनल एनर्जी से थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगता है. इसीलिए क्या होता है कि एक रोटेशनल एनर्जी के अंदर में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे और एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल फ्रॉम 0 से 1 के बीच में अराउंड 1000 रोटेशनल एनर्जी लेवल्स यहाँ पे हमारे पास रहेंगे. सो दिस विल बी द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. सो बहुत सी बार यहाँ पे क्या होता है कि दिस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आर स्टिल स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स. तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी रहेंगे. सो जब भी हम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमें प्योर मिल सकता है, लेकिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम हमें प्योर मिलने का चांसेस बहुत कम होते हैं या नहीं मिलता है. बिकॉज कि यहाँ से जब भी हमारा ट्रांजिशन होता है, लेट्स से फ्रॉम 0 to 1 में जब ट्रांजिशन होता है, तो जब 0 से 1 में वाइब्रेशनल स्टेट में तो 0 से 1 में ट्रांजिशन हुआ, लेकिन उसके साथ साथ रोटेशनल स्टेट्स में भी ट्रांजिशन हो जाता है, क्योंकि रोटेशनल स्टेट्स यहाँ पे अराउंड 1000 स्टेट्स होते हैं और यहाँ पे भी अराउंड 1000 स्टेट्स होते हैं. सो बहुत सी बार होता है कि ये यहाँ से जीरो होने का बजाय यहाँ से वो स्टार्ट होता है और यहाँ पे कहीं तो एंड हो जाता है. सो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 0 है लेकिन रोटेशनल एनर्जी लेवल 2 है, और यहाँ पर हुआ कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 1 है और रोटेशनल एनर्जी लेवल 3 में है. सो इट इज गोइंग फ्रॉम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 0 to 1, लेकिन साथ साथ में रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी 2 से 3 में ट्रांजिशन हो गया. सो इसकी वजह से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के साथ साथ हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी मिल जाता है. So we have always a vibrational rotational spectrum rather than a pure vibrational spectrum. वैसा ही चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में भी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल, दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में हमारे पास हजारों वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं और उनके अंदर में हर एनर्जी लेवल के बीच में 1000 रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं. तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ हमारा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो जाता है और रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो जाता है. सो प्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें मुश्किल से मिलता है. वी ऑलवेज गेट अ इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम rather than just an electronic spectrum. सो यहाँ पर हम जब एनर्जीज की बात करें तो एनर्जीज में ट्रांसलेशनल मोशंस के लिए एनर्जी सबसे कम लगती है. सो ई ट्रांसलेशन इज लेसर देन ई रोटेशन, ई रोटेशन इज लेस देन ई वाइब्रेशन एंड ई वाइब्रेशन इज लेस देन ई इलेक्ट्रॉनिक. This equation you have to remember it. It's important relations. E translation is smaller than E rotation. E rotation is smaller than E vibration and E vibration is smaller than E electronic. Electronic energy levels में सबसे ज़्यादा difference होता है और vibrational energy levels उससे कम होते हैं, rotational energy levels और कम होते हैं और translational और भी कम होते हैं. Then the types of spectroscopies associated with the electromagnetic radiation. When we are using radio waves, these radio waves are capable of changing the energy of the nuclear magnetic dipole. Means कि nucleus जो है उसको वो rotations ला सकते हैं. So spin जो उसका quantum number है उसको वो change कर सकते हैं radio waves, और उससे ज़्यादा उसमें energy नहीं होती है. So this gives rise to nuclear magnetic resonance spectroscopy.
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दिस विल बी द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी विल बी गिवन राइज बाय रेडियो वेव्स। दिस आर आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर MRI scans. So these we can use it for MRI scans, that is radio waves, which is applicable on the same basis as that of the NMR spectroscopy. Similarly, microwaves are having little higher energy than radio waves and are capable of changing the rotational energy levels. So they are capable of bringing the rotational motion. So we get pure rotational spectrum by using microwaves. इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होते हैं उनकी एनर्जी माइक्रोवेव से भी थोड़ी ज्यादा होती है, इसकी वजह से ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स का चेंज में ला सकते हैं. सो वी गेट ए वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम in the infrared spectroscopy. In visible and UV ultraviolet region, we get they are capable or they are having higher energies, so they are capable of bringing out the electronic changes. Electronic changes will be giving rise to electronic spectroscopy. Similarly, अगर इससे भी थोड़ा हायर रीजन में जाए तो एक्सरेज होते हैं हमारे पास. एक्सरेज आर केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग आउट द इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस इन द इनर इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में विजिबल एंड यूवी जो होता है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो जाते हैं विजिबल एंड यूवी रीजन्स में. एक्सरेज के थ्रू हमारे जो इनर ट्रांजिशंस होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ट्रांजिशंस हम कर सकते हैं यूजिंग एक्सरेज. While gamma rays are even higher energies and they are coming from the nuclear energies and they are causing lot of damages also. So we do not use this in the spectroscopy. We use up to X-rays only in the spectroscopy. So let us first solve some problems, some simple problems. Calculate frequency, energy and wave number of a radiation of wavelength 400 nanometers. ये मैं आपको आई विल नॉट बी सॉल्विंग इट कंप्लीटली, लेकिन इसके आंसर्स आपको असाइनमेंट के थ्रू सबमिट करने हैं. मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेवलेंथ हमें दिया है. सो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो फर्स्ट थिंग होती है कि आपको गिवन क्वांटिटीज यहाँ पे लिखनी है. गिवन क्वांटिटीज में हमारे पास है वेवलेंथ इज गिवन टू यू. सो वेवलेंथ इज 400 nanometers. We have 400 nanometers as the wavelength provided to us. This is equal to 400 into 10 to the power of minus 9 meters. SI units में convert कर लीजिए, that will be very good for us. Then what is being asked to us? We have been asked to find out frequency. Then we have been asked to find out energy associated with the radiation. And we have been also asked to find out the wave number associated with the this radiation. We have C, that is velocity of light, as 3 into 10 raised to 8 meters per second. Similarly, we have H, Planck's constant, as 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास और लैम्बडा हमें दिया गया है, बाकी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. सो दीज आर ऑल द गिवन क्वांटिटीज एज वेल एज आस्क्ड क्वांटिटीज. सो हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा. सो व्हाट वी कैन हैव इज लैम्बडा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू. फ्रॉम दिस लैम्बडा और वी कैन हैव इट nu will be equal to C upon lambda. So we have C value, we have it 3 into 10 raised to 8 meters per second divided by 400 into 10 raised to minus 9 meters. So this will be giving us the frequency. So this will be giving us frequency of the radiations. So इसमें से हमें frequency मिल जाएगा. Then we can have it E, एनर्जी एसोसिएटेड. एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? वी हैव प्लैंक्स इक्वेशन, E इज इक्वल टू एच न्यू. एच का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 जूल सेकेंड. और साथ में यहाँ से जो भी वैल्यू मिलता है हमें वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है तो हमें एनर्जी मिल जाएगी. एनर्जी ऑफ द
radiation. Then we have न्यू बार. न्यू बार हमें कैसे मिलेगा? दैट इज वेव नंबर. वेव नंबर वी हैव इट एज 1 अपॉन लैम्बडा. हमारे डेफिनेशन में हमने देखा था वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से मीटर. पर मीटर ये कितने रेडिएशंस यहाँ पे नंबर ऑफ वेवलेंथ्स यहाँ पर है, दैट वी कॉल इट एज ए वेव नंबर. सो यहाँ पर न्यू बार विल बी 1 अपॉन लैम्बडा, दैट इज 1 अपॉन 400 इंटू 10⁻⁻⁹. हम इसे मीटर्स में देख रहे हैं वेवलेंथ, सो इट विल बी पर मीटर. सो दिस विल बी गिविंग अस द वेव नंबर. सो यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज आती हैं दिस यू विल बी सबमिटिंग इट एज ए असाइनमेंट. सो हमें 3 क्वांटिटीज मिलेगी. एक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी विल बी इन पर सेकेंड. यहाँ पे मीटर्स पर सेकेंड है, यहाँ पे मीटर्स है, सो मीटर मीटर गेट्स कैंसल्ड एंड पर सेकेंड विल बी रिमेनिंग. दूसरा होता है एनर्जीज. दिस एनर्जी वी विल हैव इट h is in joule second और ये है per second. So second and per second gets cancelled. So we will have it as a joules. वेव नंबर हमें यहाँ पे पर मीटर में मिलेगा. सो एनर्जीज ये तीनों वैल्यूज सबमिट करनी है अलॉन्ग विद द यूनिट्स. यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री. तो यूनिट्स हमें यहाँ पे देने हैं और साथ में ये आंसर्स आपको सबमिट कर रहे हैं एज एन असाइनमेंट. सो दिस इज वन प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम इज what will be the energy difference between two energy states if a radiation of wavelength 700 nanometer is required to bring about a transition from lower energy state to higher energy state. हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है? हमें यहाँ पे पूछा गया है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स. मीन्स सपोज कि हमारे ये दो एनर्जी स्टेट्स है. लेट्स से दिस इज आवर एनर्जी स्टेट 1 एंड दिस इज आवर एनर्जी स्टेट 2. सो हमें इन दोनों का डिफरेंस हमें पूछा गया है, नॉट द एनर्जीज ऑफ एनी ऑफ दिस स्टेट्स. सो वी हैव बीन आस्क्ड विद अ डिफरेंस इन एनर्जी, दैट इज डेल्टा ई. और इसमें क्या बताया गया है? इफ अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, दैट इज गिवन क्वांटिटीज में हमारे पास यहाँ पर लैम्बडा इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर्स, दैट इज 700 into 10⁻⁹ meters. So 700 meter is required to bring about a transition from lower energy state to higher energy state. Means यहाँ पे जो हमें रेडिएशन की जरूरत है, इस रेडिएशन का एनर्जी will be equal to h will be having lambda of this much. So this we have it, E is equal to h nu, that is energy associated with the wave, that is radiation. So this will be equal to hc upon lambda. So यहाँ से हमें वो मिल सकता है. We have 6.626 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸ meters per second divided by 700 into 10⁻⁹ meters. So ये हमारा एनर्जी होगा. This will be equal to the energy change between state 1 and 2. So this will be equal to delta E. So delta E will be equal to h nu, will be equal to hc upon lambda. तो ये जो भी आपका आंसर आता है, ये आंसर आपको सबमिट करना है along with units, that is यहाँ पे हमें joules मिलेगा. So along with units आपको ये सबमिट करना है as an assignment. दोनों प्रॉब्लम्स के आंसर्स आपको सबमिट करने हैं as an assignment. You have to submit it as problem number 1. You have been asked with frequency, then you have been asked with energy, then you have been asked with wave number. Then problem number 2, you have been asked with delta E. इनके यूनिट्स के साथ आपको ये एक ही पेज में लिख करके फोटो निकाल करके आपको भेजना है एज एन सबमिट एज एन असाइनमेंट. सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. थैंक यू वेरी मच.